Hello students, so today we will see the treatment of goodwill in case of admission of the partner. Now as already we have read about the different methods for the valuation of goodwill, so now we will see the journal entries, journal entries, journal entries for goodwill in case of admission of a partner. So journal entries in case of admission in case of admission of a partner. Okay, so we have already read whenever a new partner comes in, he has to bring his share of capital as well as his share of goodwill. Okay, so what will be the journal entry? So first bit, when new partner brings his share of capital, and goodwill in cash. ठीक है, सपोज नया पार्टनर ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, तो सी हैज ब्रॉट द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल एंड गुडविल इन कैश. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट और वी कैन से बैंक अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, जितना कैपिटल लेके आएगा वो, एंड अगेन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. Okay, so what will be the narration? Narration would be being capital and goodwill, brought in. Okay, so this is the first journal entry. Now whatever the goodwill which has been brought in by the new partner, that goodwill has to be distributed among the old partners in their sacrificing ratio. Okay, so what will be the journal entry? So when goodwill is distributed, okay, among old partners in which ratio? In sacrificing ratio. हम बोले जब कभी भी गुडविल लेके आता है नया पार्टनर, तो क्या करेंगे, हम उसको गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है. हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए एंड बी है, तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट. कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो हियर आई एम राइटिंग योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, ओके. नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. So before that we are required to calculate the new profit sharing ratio, and sacrificing ratio can be calculated by the formula old ratio minus new ratio. Okay, now next condition, when amount of goodwill is withdrawn by the old partner. Okay, so whenever the old partner withdraw goodwill in cash, so what will be the journal entry? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा. कम होने का मतलब क्या? डेबिट करना पड़ेगा. सो एंट्री वुड बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, old partners capital account debited to bank, or we can write to
कैश अकाउंट। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, आई एम राइटिंग हियर SR, that is your sacrificing ratio. Narration: being goodwill withdrawn, being goodwill withdrawn in cash, being goodwill withdrawn in cash. Okay. Next condition: sometimes when what happens when a new partner is unable to bring his share of goodwill. So under this cases what happens? So the amount of goodwill would be adjusted from new partners कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगा? कंडीशन: व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, अगर कैश नहीं लेके आता है, ठीक है, so what we are required to do? We are required to adjust the amount of goodwill from the new partners capital account और current account. एंट्री क्या बनेगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और current account, whatever it would be there, it would be debited to old partners capital account, to old partners capital account. Which ratio? Same, sacrificing ratio. Narration: being goodwill adjusted, being goodwill adjusted through capital account, through capital or current account, whatever it would be. Being goodwill adjusted through capital or current account. ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? Sometimes goodwill appears in the books of firm. Goodwill appears in the books of firm means what? In the balance sheet, goodwill might have shown on the asset side of the balance sheet. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Next condition, bit number 5. When goodwill already appears, when goodwill already appears in the books of firm. बुक्स ऑफ फर्म का मतलब हम क्या समझेंगे? बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ शो किया होगा? एसेट साइड में। ठीक है, इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? दैट अमाउंट ऑफ गुडविल मस्ट बी राइट ऑफ। ओके, इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या बनेगा हमारा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर, सो एक ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, which ratio? In old ratio. Remember here goodwill which has been given inside the balance sheet, it would be written off in which ratio? In old ratio. Okay, narration would be being goodwill written off, being goodwill written off in which ratio? In old profit sharing ratio. Okay, so these are the treatment of goodwill which has been done in case of admission of a partner. Now let us solve some practical questions from the board. As we can see the question from the board, A, B, C and D were partners sharing profit and losses equally. ठीक है, E was admitted as a new partner. A, B, C, D जो partners था equally ratio है. equally ratio मतलब 1:1:1:1. ठीक है, नया पार्टनर कौन आया? E आया as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. So what is the E share? 1/3 share which he acquires equally from C and D. That means C and D वो क्या कर रहा है? वो sacrifice कर रहा है equally. Equally means 1:1. Okay. Now on E admission, the goodwill of the firm was valued at rupees 3 lakhs. तो जब E का एडमिशन हुआ तो गुडविल कितना है फर्म का? इट इज वाज बी वैल्यूड एट रुपीज 3 lakhs. पास जर्नल एंट्री इफ E failed to bring his share of goodwill in cash. ठीक है, तो बोला है कंडीशन क्या बन रहा है ये? when new partner does not bring his share of goodwill in cash. Okay, so first of all we are required to calculate the sacrificing ratio. So directly we can calculate here. यहाँ sacrificing ratio directly आ जाएगा. No need to calculate the new ratio. यहाँ पे बोला है which he acquires equally from C and D. That means sacrifice कौन कर रहा है? C and D. तो sacrificing ratio would be your 1:1.
दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ओनली सी एंड डी. ओके, सो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो पहले न्यू पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा. हु इज द न्यू पार्टनर? ई. सो ई शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना था? 3 lakhs. और ई का शेयर कितना है? ई का शेयर है आपका दिया हुआ 1/3. दैट मीन्स 1/3 इंटू हाउ मच? 1/3 इंटू 3 lakhs. ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म का है, फॉर्म का मतलब सबको मिला के है, तो उसमें से हमको पहले ई का कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? अमाउंट ऑफ गुडविल इज ₹1 lakh. ओके, नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री? हम बोले न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा पैसा, मतलब उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा. हु इज द न्यू पार्टनर? ई. सो एंट्री वुड बी ई करंट अकाउंट. ई करंट अकाउंट would be debited and how much will be the amount we have calculated. How much? 1 lakh. किसको मिलेगा? कौन sacrifice कर रहा है? your C and D. so to C capital account, जो partner sacrifice कर रहा है उसी को मिलेगा. so 1 lakh will be distributed in 1:1. so how much it would be? और 50,000. ठीक है, so to C current account how much? 50,000. again to your D capital account. ठीक है, how much it would be? 50,000. Okay, so what will be the narration? Being goodwill adjusted in sacrificing ratio. How much is the sacrificing ratio? 1:1. Okay, so this is how we are required to pass the journal entry. One more question we can see from the board as quickly. X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. So old ratio has been given. Okay, so here you see old ratio has been given how much? 5:3. and again your on March 1st 2021 they admitted Z as a partner. New profit sharing ratio is given 4:3:2. so we know that whatever the amount of goodwill would be there, that will be distributed among sacrificing ratio. So first of all we are required to calculate the sacrificing ratio. Formula क्या है sacrificing ratio का? old ratio minus new ratio. ठीक है, so old ratio is given here. Again new ratio, how much new ratio has been given? New ratio has been given 4:3:2. Okay, so we are required to calculate the sacrificing ratio. क्या निकालना है हमको? sacrificing ratio फॉर्मूला क्या होता है उसका? old ratio minus your new ratio. Okay, so first of all हम किसके लिए निकालना पड़ेगा हमको? x के लिए. so what is the old share? 5:3 मतलब 5/8 minus how much? 4/9. Okay, so here you have to take the LCM. LCM कितना आएगा? 72. 8 9 9 into 5 कितना? 45. यहाँ पे 9 8 8 into 4 कितना? 32. so how much is the ratio? Ratio would be your 13/72. Okay, now for your Y. so Y would be how much? Ratio is 3/8 minus Y का शेयर कितना है? 3/9. again LCM 72. 8 9 plus 72. 9 into 3 कितना? 27 minus 24 कितना आएगा? 3/72. so how much is the sacrificing ratio? sacrificing ratio is equals to sacrificing ratio कितना आएगा? that is equals to 13:3. okay, now you see Z brought in ₹1 lakh in cash as a share of capital. तो Z कितना रुपए कैपिटल लेके आया? 1 लाख रुपीज एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाया. ठीक है, द फर्म गुडविल ऑन Z एडमिशन वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000. तो फर्म का गुडविल कितना था? 1,80,000. एट द टाइम ऑफ Z एडमिशन गुडविल existed in the books of the firm was ₹2,40,000. That means when goodwill already appears in the books of the firm, already appears at 2,40,000. ठीक है, तो हमको जर्नल एंट्री हमको पास करना है. ओके, so first of all we are required to write off the goodwill which has been given in the book of the firm. goodwill कितना दिया है? 2,40,000. ठीक है, और पार्टनर कौन है? X and Y. so what will be the entry? first entry X capital account. X capital account would be debited. Again Y capital account would be debited to goodwill.
गुडविल को हमको राइट ऑफ करेंगे। गुडविल का अमाउंट कितना था, which has been existed in the book of the firm कितना है 2,40,000. So this has been created 2,40,000 and this would be written off in which ratio, in old ratio 5:3. That means 2,40,000 would be distributed in the ratio 5:3. कितना कितना आएगा ये, x का कितना आएगा 1,50,000 and for y how much it would be your 90,000. Okay, narration क्या लिखेंगे हम, being क्या, being goodwill written off, being goodwill written off in which ratio, old profit sharing ratio, old ratio कितना दिया था 5:3. ठीक है, so first of all we have written off the amount of goodwill which has been existed in the book of firm. Secondly, नया पार्टनर कौन था, Z. कितना कैपिटल लेके आया है वो, Z has brought his 1 lakh rupees in cash as a share of capital. एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, गुडविल का पैसा तो नहीं लेके आया, कैपिटल लेके आया, कितना कैपिटल लेके आया 1 लाख. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड हाउ मच 1 लाख. टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हु इज द न्यू पार्टनर Z. सो टू Z कैपिटल अकाउंट, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज योर 1 लाख. नरेशन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट in. Okay, so fresh capital brought in. उसके बाद the your Z could not able to bring his share of goodwill in cash, वो goodwill का पैसा नहीं लेके आ पाया है. ठीक है, firm goodwill on Z admission was valued at how much, rupees 1,80,000. that means 1,80,000 में वो किसका goodwill दिया हुआ है, firm का goodwill दिया हुआ है. ठीक है, तो that means here we can calculate your Z share of goodwill, Z share of your goodwill. तो Z का शेयर कितना था 2/9. ओके, Z शेयर was 2/9. so 2/9 into 1,80,000. so how much is the amount of goodwill which has been required to brought in, कितना लेके आना चाहिए था उसको 40,000. ओके, so now वो goodwill नहीं लेके आ पाया तो उसका करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे. so Z current account would be debited and how much is share of goodwill 40,000. नाउ किसको मिलेगा, x और y को, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकाले हम 13:3. दैट मींस 2x कैपिटल अकाउंट एंड अगेन 2y कैपिटल अकाउंट. 40,000 को कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 13:3. ओके, सो हाउ मच विल बी द अमाउंट, अमाउंट वुड बी 32,500 and 7,500. Okay, narration, being goodwill adjusted in sacrificing ratio. So being goodwill adjusted in sacrificing ratio, we have calculated how much 13:3. Okay, so this is how we are required to pass journal entry on the your various cases of goodwill. So that's all for today. Thank you.